chemistry, no doubt at all. So we have to discuss this nuclear chemistry. Now, here in the chapter, we are going to discuss two main topics. Number one, that is introduction to nuclear chemistry. What is actually nuclear chemistry? This is the first step. Nuclear chemistry. What is actually nuclear chemistry? Where we are going to discuss why we need to discuss this nuclear chemistry, how we can make it analogy with our solar system. Then what are the terminology, what are the concepts related with nuclear chemistry? And these concepts are nothing but you can say, where we are going to discuss, there are different classification of nuclides based on different category. Then the stability of the nucleus and the factors which are responsible for the stability of the nucleus. That is what we discuss here in the first half of the chapter. Middle part of the chapter, where we are concerned with the core concept of nuclear chemistry and radioactivity. See, the stability of the nucleus, any of the nucleus कहाँ पे होता है तो हम अच्छी तरह जानते हैं. There is a structure of atom, जो हमने structure of atom के चैप्टर में डिस्कस किया था. तो structure of atom में देखते हैं हम लोग कि सेंटर में छोटा सा पार्ट होता है, there is nothing but the nucleus, and उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं. So that is what we are seeing. So ये जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, ये जो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी है, so that is affected by a number of factors. So middle part में चैप्टर के we'll discuss the factors affecting the nuclear stability, जिसके अंदर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो आता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस आते हैं, न्यूक्लियर डीके आता है, न्यूक्लियर पोटेंशियल आता है, मास डिफेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट आता है, बाइंडिंग एनर्जी आ जाता है. ये मिडिल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग. और थर्ड पार्ट की बात जब शुरू होती है, दैट इज नथिंग बट द रेडियो एक्टिविटी. जो सेकंड हेड यहाँ पे दिखता है आपको, रेडियो एक्टिविटी. न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नाम का एक अलग सा एक खास पार्ट आता है जो न्यूक्लियर के साथ जुड़ा हुआ है. आज की तारीख में तो ये रेडिएशंस के सिवाय तो जिंदगी सिंपली इम्पॉसिबल है. रेडिएशन के सिवाय अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर के अंदर भी इस रेडिएशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. हम लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मोबाइल पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं आप लोग, और इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है. अगर इंटरनेट दो तरीके से आ रहा है, तो वाईफाई के थ्रू आपके घर में आ रहा है, या वायर के थ्रू आ रहा है, या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा है. मतलब मोबाइल आपका जो कनेक्ट हुआ है वो रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा है. एंड ऑल दिस रेडियो वेव्स एंड एवरीथिंग इज ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, लेकिन इसका बेस बनता है, नो डाउट एट ऑल. So we have to discuss this radioactivity phenomena. That means there is a emission of radiations from the nucleus of an atom. So this phenomena is nothing but the radioactivity, and how this radioactivity affects human life, or you can say ecosystem, or number of phenomena, that is matter, interaction of matter with different radiations, types of radiation, that is alpha, beta, gamma radiations, nuclear reaction उसी के साथ किस तरीके से डील करते हैं, that is fission, fusion, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ऐसे कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस उसके अंदर आते हैं. हम जो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन देखते हो वो अलग है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो रिएक्शन देखते हो वो अलग है. सो हम ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं और क्या रिएक्शंस होते हैं. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी. ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और रेडियो एक्टिविटी है, इनके एप्लीकेशंस क्या है. फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए. हम एवरी टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड के लिए पढ़ रहे हैं. मतलब बच्चे तो बहुत बार ऐसा ही लेते हैं कि बीइंग वी आर इन 11th 12th साइंस, हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें जेईई नीट के लिए पढ़ना है. बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड कहा जा सकता है, शॉर्ट विजन कहा जा सकता है. बेसिकली इट मेक्स अस अवेयर अबाउट मेनी ऑफ द थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड अप टू दैट लेवल. There are many applications of this nuclear chemistry and radioisotopes are there in our modern lifestyle. So, जैसे कि हम आज जानते हैं कि कैंसर एक बहुत बड़ा डिसीज बनता जा रहा है. कैंसर एक बहुत बड़ा डिसीज है, और कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर ये रेडियो आइसोटोप्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. फाइनल ट्रीटमेंट करके आज की तारीख में अगर क्या यूज किया जाता है तो ये रेडियो आइसोटोप्स यूज किया जाता है. यहाँ से लेकर बाकी सारे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस उसके मेडिसिन में है, एग्रीकल्चर में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, कई सारे इंडस्ट्रीज ऐसे जहाँ पे ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स और रेडियोइसोटोप्स यूज किया जाता है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन हियर ऑफ दिस चैप्टर. वंस अगेन इस चैप्टर को हम लोग तीन पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं. पहला पार्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मतलब बाकी केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या फर्क है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ये आप डिस्कस करेंगे. मिडिल पार्ट में न्यूक्लियस और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कौन से फैक्टर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्कस करेंगे.
थर्ड पार्ट में रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एंड उनके एप्लीकेशंस हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एज वेल एज रेडियो आइसोटोप्स के। यही इस चैप्टर का पार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है हमारी इस चैप्टर का। और डोंट स्टडी दिस चैप्टर ओनली फॉर द एग्जाम ओरिएंटेशंस। मतलब आपको बता दो कि फ्यूचर ही हमारा न्यूक्लियर के साथ जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस की जाए चीज है, दैट इज नथिंग विद द रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का बहुत बड़ा इशू है और रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ हम लोग शिफ्ट करें हमारा फोकस। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज द पावर to supply unbreakable, unbeatable energy to the world. And that's why here we need more research and more awareness regarding this nuclear chemistry, which is very, very potential chemistry. So this chapter is just introduction to nuclear chemistry. Nuclear chemistry is very, very vast. उसका एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, बट काफी मस्त इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। काफी सारी टर्मिनोलॉजी और काफी सारी चीजें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हमारी इसके साथ क्लियर हो जाएगी। Hope so everyone amongst us will enjoy the journey of this nuclear chemistry and radioactivity. So let's move to the journey of this chapter, that is, you can say, nuclear chemistry and radioisotopes. Now, without now let's have the introduction of the topic. Whatever the introduction I have given, that was related with the total nuclear chemistry and nuclear chemistry as well as radioisotopes. चैप्टर क्लियर था। अभी टॉपिक इंट्रो करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियोआइसोटोप्स दो साइंटिस्ट के बिना तो आगे नहीं जाएगा, हम अच्छी तरह जानते हैं। शायद आपने जीके में भी पढ़ा हुआ है। हेनरी बेक्वेरेल, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे। हेनरी बेक्वेरेल, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ द न्यूक्लियर रेडियोकेमिस्ट्री, एंड सेकंड इज नथिंग बट मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी हु गॉट नोबेल प्राइज हियर इन रेडियोकेमिस्ट्री के अंदर का नोबेल प्राइज मैरी क्यूरी को मिला है, शायद वो नाम आप अच्छी तरह जानते हो। और हेनरी बेक्वेरेल, ये दो साइंटिस्ट के बिना न्यूक्लियर केमिस्ट्री आगे नहीं जाएगा। मतलब almost 1852 around onwards, the journey began with the nuclear chemistry, and there are a number of matters, number of things matters when there comes interaction of radiations with the biological system, with the human. There are many radiations which are naturally occurs, and what is the interaction of this radiations, radioactivity, with the matter, as well as how it interacts. That was the part of study, that was the part of interest, because basically when it comes to calculate the age of the earth, age of the rocks, how is the what was the age of the fossils and fuels and everything, how we are going to calculate that? मतलब अर्थ का कितना साल का एज है, किसी रॉक्स का कितना साल का एज है, कौन सा फॉसिल कितने साल पहले का है, ये फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ नए टेक्निक्स की जरूरत थी। और जहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक काफी अच्छे सॉल्यूशंस देता है, और इसी कारण से ये एक नया फील्ड हमारे सामने आता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ फील्ड में आता है। That's why scientists were interested to know or to have the in-depth knowledge of this concepts related here with the nuclear chemistry and radioactivity. Okay, so that was the intro with this one. Now, the first topic, that can we compare it with the solar system? Can we compare it with the solar system? Basically with the structure of atom. Now, let's move. When we discuss the structure of atom, पहले देखते हैं कि structure of atom हमने एक chapter में discuss किया था। structure of atom, where we have discussed there is a nucleus at the center of an atom. And around this nucleus, here electrons revolves in circular orbit. So this is the structure of atom. So it's not the center actually, center is here somewhere. So this is, here are the electrons which revolves in circular orbit. Here are the electrons. So we have seen this is the structure of atom. Many amongst you may be able to recall this diagram. So this is nothing but the nucleus. This is nothing but the nucleus. Okay, and here these are nothing but the electrons. So these are nothing but the electrons. तो हमें अच्छी तरह जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने देखा देवे फोर थियरीज वी डिस्कस। नंबर 1 जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, then Rutherford's atomic model, and finally the quantum mechanical model, which have established the structure of atom. और उसी ने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया। हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम consists of centrally situated highly dense area known as nucleus. Centrally situated highly dense area known as nucleus, whereas electrons revolves around the nucleus in a circular orbit or circular paths. That is, these are nothing but the electrons. So we have seen this. ये हम डिस्कस करते हैं। Now, एटम के दो पार्ट्स होते हैं। This is a nucleus and remaining part, that is second part, outer part, that is here. Okay. Now, when we discuss about the nucleus, nucleus is very highly dense area situated at the center, and this nucleus consists of nucleons, and these are nothing but protons.
and you can say neutrons. So that's why proton, neutrons, and electrons are called as the fundamental particles of an atom. So be clear. Protons, neutrons, electrons are called as fundamental particles of an atom because atom is made up of proton, neutrons, and electrons. But whenever the location is concerned, हम अच्छी तरह जानते हैं कि protons and neutrons are present into the nucleus, which is very small parts of an atom. अगर atom का पूरा structure consider करते हैं, तो nucleus बहुत ही small होता है. Almost ready second that 10 raised to minus 15 मीटर का diameter होता है nucleus का. 10 raised to minus 15 मीटर का diameter होता है nucleus का. Atom का अलग होता है. So in that sense, you can say all protons and neutrons are present in the nucleus of an atom. That's why they are also called as nucleons. तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? Nucleons कहा जाता है. See, protons, neutrons occurs into the nucleus, and that's why they are called as nucleons. उन्हें nucleons करके बोला जाता है, कॉल किया जाता है. And electrons revolves around the nucleus in circular orbit or circular paths. This is the structure of atom that we have discussed in structure of atom chapter. Can we say this model can be made analogy, can be compared with our solar system? Because since our childhood, since our school life, we are discussing the solar system. We know very well, yeah, in our solar system, sun lies at the center and all other planets revolves around the sun. So this is the system, solar system. So can we see like this one? This is nothing but a solar system-like structure where this nucleus can be considered as a sun, and these are the different planets which revolves around the sun. They have particular paths. Every planet has a particular path where it revolves. Also, there is every electron has a particular path, and that electron revolves in that particular path. So the structure of atom can be compared with our solar system, can be made analogy with our solar system, where nucleus is as like a sun, which is at the center of the solar system, and rest of the planet revolves around the sun. So electrons revolves around the nucleus. So electrons are as like a planet, and this nucleus is like a sun. So that's why this can be made analogy compared with our solar system. So structure of atom is like a solar system. Clear with this? Now, when we discuss digital part of this nucleus, जैसे मैंने बताया कि this nucleus is very highly dense area. When we have the introduction about this one, nucleus is very highly dense area. The density is of 10 raised to 15. 10 raised to 15 times का उसका density होता है as compared to this one. मतलब ये जो rest part of atom है, उसके साथ अगर हम न्यूक्लियस का डेंसिटी कंसीडर करते हैं तो 10 raised to 5 टाइम्स हायर देन द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस. 10 raised to 5 मतलब इट्स बिग नंबर है ना. 10 के ऊपर 5 zeros देने हैं आपको, 1 के ऊपर 5 10 के ऊपर 5 zeros देने हैं, उतना वो होगा. सो इस तरीके से डेंसिटी ऑफ दिस रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज स्मॉल एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी हाई, दैट इज 10 raised to 5 times greater than that. Whereas diameter is also around 10 raised to minus 15 meter. This is the diameter of the nucleus. And nucleus में protons and neutrons which are present here into the nucleus, and electrons revolves around the nucleus. This is what we can say here. Now, every element, there are 118 elements in the periodic table. Every element has its atom, and the structure of atom is we have studied over here. So every element, every matter has a different atom over here. Now, the thing is that there is one concept called as isotopes. When naturally we found that there are many isotopes for each and every element. Take an example of hydrogen. Hydrogen has three isotopes, that is hydrogen, deuterium, and tritium. Carbon has 3 hydrogen, carbon 12, carbon 13, carbon 14. उसके definition देखेंगे. But एक ही elements के काफी सारे isotopes हम लोगों को मिलते हैं. And फिर उसके हिसाब से इस atom के अंदर कुछ changes किए गए, and ये जो central nucleus है, this nucleus is nothing but called as a nuclide. So atoms of the different elements are known as nuclides. तो chemistry में, nuclear chemistry में हम लोग atom को atom word use करते हैं, but when it comes to the nuclear chemistry, it is called as a nuclide. So this is the common word which is used for the nuclide. So you can say carbon nuclide, we can say hydrogen nuclide, we can say iron nuclide, we can say radium nuclide, we can say uranium nuclide. So normal chemistry में the atom should be known as atom of carbon, atom of nitrogen, atom of oxygen. But when it comes to nuclear chemistry, that is known as nuclide. Because here in the chapter, we are going to discuss everything related with the nucleus. We are not going to discuss related with other part of the atom. So be clear now, इस chapter के अंदर ये बहुत important बात है. We are going to enter into the nucleus, which has the diameter of 10 to the minus 15 meter. Nucleus के अंदर enter करना, nucleus के बाहर का कुछ भी नहीं discuss करना इस chapter के अंदर. So देखिए, structure of atom we have discussed in one of the chapter called as structure of atom. Once structure of atom is very clear, structure of atom has two parts. One is nucleus and another is the rest part of an atom.
Here in the chapter, we are going to enter into the nucleus, not related with other part of that. Electron से कुछ लेना देना है नहीं, बाहर के किसी पार्ट के साथ हमें लेना देना नहीं. Here in the chapter, we are concerned with the nucleus. तो nucleus के अंदर enter करके discuss करेंगे, and that's why every atom of the element is called as a nuclide here in chemistry. So हम अच्छी तरह जानते हैं every atom के अंदर हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं A is equal to Z plus N. ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर. A is equal to Z plus N. So what is this? A is nothing but the mass number. A is nothing but the mass number. We have seen that A is nothing but atomic mass number, whereas Z is nothing but the atomic number. Z is nothing but the atomic number, and N is nothing but the neutron number. Okay, so this is neutron number. So we have seen this. ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, जिस रिकॉल रिवाइज कर रहे हैं हम लोग. तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज रिलेटेड विद द न्यूक्लाइड. सो A is nothing but the mass number और A is equal to Z plus N. किसी भी एटम के बारे में ये ट्रू होता है. A is equal to Z plus N. A क्या होता है? A is the atomic mass number of that element. Z is nothing but the atomic number of that element. That is also nothing but related with the proton numbers. And N nothing but the neutron number. तो इसके अंदर when there was a classification of the elements, Mendeleev and Moseley has again differentiation related with this one. Mendeleev thought that this atomic mass number is a very fundamental property, whereas Moseley find that this atomic number is a very fundamental property. That was a difference. So Mendeleev felt that A is a very fundamental property, whereas Moseley felt that Z is a very fundamental property of each and every atom. ये कैसा ना कि किसी भी एटम के प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सो आइदर जेड के ऊपर आइदर एक, सारे फैक्टर्स जरूर रिस्पांसिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो मोस्टली के हिसाब से जेड है, दैट इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव के हिसाब से क्या है तो ए. बट ओवरऑल हम अच्छी तरह जानते हैं कि ए इज नथिंग बट जेड प्लस एन. ए इज द एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर. Now what is this atomic number? Atomic number is nothing but total number of protons present in the nucleus of an atom. So total number of protons present in the nucleus of an atom is called as atomic number, that is Z. तो ये जो protons है, this total protons nucleus में, that is nothing but the Z. That is nothing but the Z. And total neutrons present in the nucleus of atom, that indicates the N. That indicates the N. And Z and N indicates the atomic mass number. यहाँ पे actually plus electrons भी होता है. Electrons भी होता है. मतलब mass, total mass of an atom must be Z plus N plus electron का mass. बट हम अगर कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास में और प्रोटॉन के मास में बहुत फर्क होता है. प्रोटॉन का मास 1837 times heavier than electron. मतलब इलेक्ट्रॉन का वेट और प्रोटॉन का वेट अगर हम कंपेयर करते हैं, मास कंपेयर करते हैं, तो 1837 टाइम्स हेवियर कौन है? प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन इतना लाइटर है. तो इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है. मतलब आपके पास ऑलमोस्ट आपके पास 2000 रुपए और 2000 रुपए में से 1 रुपया. सो 2000 में एक कंपेयर करेंगे, एक भी नहीं एक्चुअली, 2000 में 0.555 ए भी ऐसा उतना मास है. इतने टाइम से बात करते हैं तो 1 रुपीज तो इक्वल टू है. तो इसका मतलब ये है 2000 के साथ कंपेयर करें तो 1 रुपी इज वेरी वेरी स्मॉल. उसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 रुपीज है तो मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट 2000 इतना है. सो मतलब प्रोटॉन इज मच हेवियर पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करेंगे तभी भी वो बहुत निग्लिजिबल है. And that's why it is not considered here in this formula. So इसलिए atomic mass is calculated using just Z and N. Z is nothing but the atomic number, and atomic number is nothing but the total number of protons present in the nucleus of an atom. Be clear with the definition of this. These are very fundamental and important definitions. What is atomic number? Z. Z is atomic number. And atomic number का definition क्या है? It is the number of protons present in the nucleus of an atom. So number of protons present in the nucleus of an atom is called as an atomic number, which is denoted by Z and called as atomic number. Whereas what is neutron number? That is nothing but the number of neutrons present in the nucleus of an atom is called as a neutron number. That is called as a neutron number. Yeah, or total number of protons and neutrons is nothing but the mass number. Electrons mass is very very small, as 1837 times lighter than the protons. That's why it is negligible. It's not considered. वो consider नहीं करते हम लोग, and that's why we have this. And all these are nothing but called as a nuclide. तो यहाँ पे कार्बन न्यूक्लाइड, हाइड्रोजन न्यूक्लाइड ऐसे हम लोग कहेंगे, उस तरीके से हम लोग कहते हैं. क्लियर विद दिस? सो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कार्बन न्यूक्लाइड की बात करते हैं तो कार्बन न्यूक्लाइड केमिस्ट्री में कैसे दिखाए जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका और बात है यहाँ पे. अब देखिए केमिस्ट्री में न्यूक्लियर हमेशा से दिखाया जाएगा X, Z, A और N. ये पहला तरीका है. X, Z, A और N. This is also one of the important way. This is the first way. कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा सिर्फ X, Z, A.
कुछ बुक में आपको ऐसे मिला XZA, कुछ बुक में आपको यहाँ पे मिलेंगे like that. These are the different ways, but this is the right way. This is the only right way. अलग अलग बुक में आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन मिल सकता है उसका, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर व्हाट इज दिस X? X represent the symbol of element. Everyone, please note down it, and it's very important. It has to be remembered, recalled well in order to get this nuclear chemistry value. X indicate the symbol of element. कोई भी symbol of element हो सकता है. Z हम अच्छी तरह जानते हैं. Z is nothing but the atomic number. A is nothing but the mass number. और A is nothing but the neutron number. किसी भी एलिमेंट की इधर ये हमेशा एटॉमिक नंबर बताया, Z बताया, that is atomic number. यहाँ पे A होगा, that is nothing but the mass number, और यहाँ पे N होगा, that is nothing but the neutron number. And what the relation between them is summarized here. A is equal to Z plus N. Say for example, कार्बन लेते तो कार्बन 6, 12, 6 ऐसा होता है. So this is the first example of carbon you can see here. You can have another example of oxygen. Oxygen 8, 16, यहाँ पे 8 है ना. अब ऐसा. Now thing is that ये जो न्यूट्रॉन नंबर है ना, ये न्यूट्रॉन नंबर ये हम निकाल सकते हैं by using this formula. अगर हमें A और Z पता है तो न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं. ये दो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इतना फंडामेंटल नहीं है, और इसीलिए लिखते समय दो ये स्टैंडर्ड तरीका है. लिखते समय जनरली ऐसा लिखा जाता है कार्बन 12 and 6 ऐसा लिखा जाता है. ओके, सो इसे लिखने का तरीका है कार्बन 6 and 12, ये तरीका है. समझ रहे हैं आप लोग? ऑक्सीजन को लिखने का तरीका क्या रहेगा? फिर ऑक्सीजन को लिखने का ऑक्सीजन 8 and 16 ऐसा रहेगा. समझ रहे हैं आप लोग? So this is the way how we are going to represent the nuclides. इस तरीके से हम लोग nuclides present करने के चांसेस होते हैं. So that's why this is the carbon nuclide, this is oxygen nuclide, जो इस तरीके से दिखाया जाता है. अभी इसके अंदर भी एक खास बात आती है. इसके अंदर भी खास बात आती है कि what is this 6? 6 indicates the atomic number. Z is nothing but the atomic number. हम जानते हैं Z is atomic number. तो 6 indicates the atomic number. मतलब कार्बन का atomic number कितना है? 6 है. 12 मास नंबर, तो कार्बन का मास नंबर कितना है? 12, और कार्बन का न्यूट्रॉन नंबर कितना है? 6, और ये तीनों का रिलेशन क्या है? A is equal to Z plus N. हम इसे निकाल सकते हैं. सो अगर हमें ये पता है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं आराम से, 6 निकाल सकते हैं. और इसीलिए वैसे भी इंसान थोड़ा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है, थोड़ा सा सिंपल वे ढूंढने की कोशिश करता है. इधर भी आता है, इतना बड़ा कौन लिखेगा? और ये तो फिक्स है ना कि दिस इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और कार्बन का एटॉमिक नंबर हमेशा 6 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा. ये एटॉमिक नंबर अगर बदलेगा, देखिए 5 में आते तो बेरिलियम है, 6 पे कार्बन है और 7 पे जाते तो नाइट्रोजन है. तो ये अगर बदलेगा, एलिमेंट ही बदल जाता है, न्यूक्लाइड ही बदल जाता है. इसका मतलब है ये कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है हमेशा 6 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला. तो सिंपली कार्बन ऐसा 12 लिखा जाता है, कार्बन 12 लिखा जाता है. समझ रहे हैं आप लोग? तो कार्बन 12 ऐसा इतना लिखा तभी भी सफिशिएंट होता है. द रीजन बिहाइंड दैट दिस इज एटॉमिक नंबर व्हिच इज लाइक अ रोल नंबर, है ना. मतलब मानो आप एग्जाम में गए हो, बोर्ड के एग्जाम, 12th के एग्जाम में जाते हो, 11th के एग्जाम में जाते हो, 10th के एग्जाम में गए थे आप, और 10th में आपने पेपर वगैरह दिया, लेकिन उसके अंदर आपने सीट नंबर ही नहीं लिखा आपका बोर्ड का, उसका कुछ मतलब नहीं. यू वोंट गेट अ मार्क्स बिकॉज आपने सीट नंबर ही नहीं लिखा था. भले आप एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा सॉल्व करो, लेकिन आपको सीट नंबर लिखना ही लिखना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. वो एग्जामिनेशन का आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. कॉलेज में जाते हो, रोल नंबर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. उसी तरीके से दिस इज एटॉमिक नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. कार्बन का हमेशा एटॉमिक नंबर 6 ही है, कार्बन का रोल नंबर 6 ही है, वो नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा लाइक दैट. तो जब तक पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बदलता, पूरा साइंस नहीं बदलता, तब तक नहीं बदलेगा. दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. तो वो लिखने की जरूरत नहीं ना, सिर्फ कार्बन 12 लिखो, सफिशिएंट है. ऑक्सीजन के केस में भी वही होगा. ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन 16 लिखने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन 8, सिर्फ ऑक्सीजन 16 लिखे है, यहाँ पे 8 ही है, ये लर्न होता है. और फिर ये 8 है, ये 16 है, इधर का निकाल सकते हैं हम लोग लाइक यूजिंग दिस फार्मूला. A is equal to Z plus N. हम जानते हैं A is equal to Z plus N. अगर N निकाला तो A minus Z करना पड़ेगा. तो A minus Z, ये A है, यहाँ पे Z 8 है, तो 16 minus 8 is 8. इधर का 1 ही आएगा, जो इस तरीके से आता है. समझ रहे हैं आप लोग? तो लिखने का तरीका और दिखाने का तरीका ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से है. तो यहाँ पे केमिस्ट्री में हर एटम को न्यूक्लाइड कहा जाता है, और हर न्यूक्लियर के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, और वो प्रॉपर्टी इस तरीके से समराइज किए जाते हैं. तो इस केमिस्ट्री में आपको आगे जाके सिर्फ इस तरीके से मिलेंगे नोटेशंस. दीस आर कॉल्ड न्यूक्लियर्स. इस नोटेशंस मिलेंगे, और इस नोटेशन के साथ हम लोग डील करेंगे. इट बिकम्स वेरी इजी, एंड दैट कम्स फ्रॉम दिस वन. दिस इज वेरी फंडामेंटल बेसिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लाइड. X, Z, A, N. X represent the symbol of element. Any element. हमारे जो 118 element इसमें से कोई भी element ये हो सकता है. A is its mass number, Z is atomic number. Whereas N is its neutron number. N उसका क्या है? Neutron number है. So उस तरीके से वो इसके अंदर आ जाता है. Clear? So that is what we can say. तो that is what we get here. Clear? कोई डाउट इसके अंदर?
Also, everyone is getting it well, and I'm trying to put in my way. So that is what we can say, nuclei. Now, after this introduction, we have to discuss the classification of elements based on different criteria. So, सबसे पहले उसके लिए ये जरूरी है. That is what we can say. Here is the representation. Here is the carbon nuclide. Here is the oxygen nuclide. और generally इस तरीके से लिखे जाते हैं. Carbon 12, carbon 16 इस तरीके से वो लिखे जाते हैं. ठीक है. So now चलते हैं हम लोग next topic की तरफ. That is classification of elements, nuclides. Okay, so classification of nuclides based on different criteria. तो उसके अंदर देखिए सबसे पहला जो आता है, that is nothing but you can say isotopes. Number 2, isobars. थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल उसके आगे लिखने पड़ेंगे मैं. देखिए, number 1 isotopes, number 2 isobars, number 3 mirror nuclei, number 4 isotones, and number 5, that is you can say beta nuclides. Okay, these are the 5 important classification of the elements, beta nuclides. So we have this one. Now, this is the classification which is based on the different criteria. So we have to discuss सबसे पहले isotopes. Isotopes किसे कहते हैं? आप शायद जानते हो. Is there anyone amongst you know the definition of isotopes? So if anyone knows, please let me know. Accordingly, I will put the examples and I will explain that again. So is there anyone? Okay. ठीक है. अभी हमने देखा देखिए, एक देखा हमने कि any nuclide is always represented as X, Z, A and N. जिसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं कि Z is nothing but the atomic number, then A is nothing but the atomic mass number, and N is nothing but the neutron number. Okay, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन. अभी आइसोटोप्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग. आइसोटोप्स के कुछ एग्जांपल देखिए आप लोग. That is you can say carbon 12 6, carbon 13 6, carbon 14 6. अभी मैं जब लिखूंगा तो कार्बन 12 13 14 लिखूंगा. 6 6 से लिखने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हो. और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, ऐसे भी लिखेंगे. ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18. So these are the isotopes, these are the isotopes, or these are also isotopes. All these are the isotopes. All these are the examples of isotopes. इनमें क्या मिलता है आपको? ये अगर आइसोटोप्स की बात करते हैं, so they हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन के ही न्यूक्लाइड्स है. फर्क क्या है? सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. मास नंबर क्यों डिफरेंट है? बिकॉज उनके अंदर न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा. सो यहाँ पे देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है. A इज इक्वल टू Z प्लस N है. तो A अगर 1 है तो Z यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0. तो दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू 1 आएगा. क्लियर? इसकी केस देखते हैं हम लोग. सेकंड केस, दिस इज फॉर हाइड्रोजन 1 1. अब हाइड्रोजन 1 2 की बात करते हैं. हाइड्रोजन 1 2 की बात करते हैं तो A कितना है इसका? A इज इक्वल टू Z प्लस N. तो A कितना है इसका? 2. मतलब 1 प्लस 1 होना चाहिए. यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 होता है. ठीक है, ये कॉमा है, मतलब लाइक दिस इज द कॉमा. सो दिस हैज टू बी 1. तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, ड्यूटेरियम की बात करते हैं. दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, दिस इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटियम. उनके नाम है मतलब. बट केमिस्ट्री में न्यूक्लियर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 ऐसा माना जाता है. उनके अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ऐसा. तो ना इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 है. सो इसलिए 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा. इसके अंदर देखिए एटॉमिक नंबर 1 है और न्यूट्रॉन नंबर भी 1 है, एंड दैट्स व्हाई मास नंबर 2 है. इसके अंदर ये 1 है, हियर मस्ट बी 2. सो H13 की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? A इज इक्वल टू Z प्लस N. तो A अगर 3 है तो हियर मस्ट बी एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए. तो तीनों को कंपेयर करते हैं तो न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2. तो न्यूट्रॉन 1 0 1 एंड 2 ऐसे तरीके से न्यूट्रॉन नंबर होते हैं. तो इसका मतलब है isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number are called as isotopes.
These are isotopes of carbon. Carbon क्या isotopes है? मतलब twin की बात करते हैं हम लोग, हमारे daily routine में हम twin देखते हैं, तो twin की तरह है. तो यहाँ पे क्या होता है? Carbon having same atomic number but different mass number are called as isotopes of carbon. तो isotope का definition ये आता है. Isotopes are the atoms of the same element. Atoms of the same element having same atomic number but different mass number. Atomic number same होता है, mass number different होता है. That's why they are called as isotopes. So these are the examples of isotopes what I have written on the board. Clear with this? So everyone hope what this is nothing but definition of isotopes. Let's come to isobars. Let's come to isobars. Isobars की बात करते हैं. See now here, we can have sodium 11, 23. Here, magnesium 12, 23. Then we can have here calcium 40. We can have argon 40 या फिर पोटेशियम 40. ये है. तो अब देखिएगा, these are the elements जिनके अंदर होता क्या है कि सोडियम की बात करते हैं. सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, बट मास नंबर 23 एंड 23 है. तो दोनों में मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है. दिस इज द एलिमेंट ऑफ सोडियम एंड दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम. तो आइसोबार्स का मतलब होता है, आइसो मतलब ऑलमोस्ट सेम है, आइसो सेम. इधर क्या सेम है? एटॉमिक नंबर. इसके अंदर सेम क्या है? मास नंबर. सो यहाँ पे डेफिनेशन आता है, these are the atoms of different elements. These are the atoms of different element having same number of atoms, some same atomic mass number but different atomic number. Mass number same होता है but atomic number different होता है, and that's why they are called as isobars. उन्हें हम लोग isobars ऐसा कहते हैं. Clear with this? So this is what we can say, isobars. So isotopes में क्या होता है? Isotopes are the atoms of the same elements having same atomic number, different mass number. Isobars में क्या है? Atoms of the different elements having same atomic mass number but different atomic number. That is, you can say isobars. Okay. Next is the thing of mirror nuclei. Mirror nuclei के example देखिएगा. Hydrogen 1, 3 और helium 2, 3 ऐसा उसका example है. अभी आप लोग उन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि these mirror nuclei are nothing but isobars. These mirror nuclei are nothing but isobars. But it is not. These are not isobars only. Isobars हो सकते हैं. But every isobar is not a mirror nuclei. Some mirror nuclei can be isobars, but every isobar could not be a mirror nuclei. Mirror nuclei के लिए this element must differ by only one proton and only one neutron. So दोनों के अंदर difference किस बात का है? One proton का और one neutron का. That is the difference. So whenever two nuclei differ just by one proton or just by one neutron, then that phenomenon is called a mirror nuclei. So mirror nuclei होने के लिए बहुत जरूरी है. Two elements must differ just by one proton and one neutron. इतना ही difference होना है. दो नहीं चलेगा. एक प्रोटॉन का डिफरेंस और एक न्यूट्रॉन का डिफरेंस. इतना डिफरेंस है तभी जाके उसे कहा जाएगा mirror nuclei. Clear with this? So that is what we can say. Third one. So mirror nuclei are the elements of different elements having a difference of one proton and one neutron. Then they are called as mirror nuclei. Isotones. Isotones का एग्जांपल देखिए आप लोग. Isotones. सोडियम 23, 11 और मैग्नीशियम 12 and 24. अब ये दोनों केस में देखिएगा कि सोडियम 23, 11 एंड मैग्नीशियम 12, 24. अभी दोनों एलिमेंट में अगर हम उनका न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इसका न्यूट्रॉन नंबर 12 minus 12 is 12, 23 minus 11 is 12. तो दोनों में भी this is a 12, this is a 12, and this is nothing but the neutron number. This is nothing but the neutron number. So these are the elements. These are the elements having same number of neutrons. So atoms of the element having same number of neutrons must be called as isotones. Must be called as isotones. Hope you are getting the definition. That is what is the isotones. Clear? So we have seen this four important definitions. Once again, देखिएगा. What are the isotopes? Isotopes are the atoms of same element having same number of same atomic number but different mass number. Same atomic number but different mass number are called as isotopes. What are isobars? Atoms of the different element having same number, same atomic mass number but different atomic numbers are called as isobars. What are mirror nuclei? These are the nuclei of the atoms differ just by one proton and one neutron.
They just differ by one proton and one neutron. Then only they can call it a mirror nuclei. What are isotones then? Isotones are the elements having same number of neutrons. Same number of neutrons. Elements having same number of neutrons are called isotones. Clear with this? And now we have discussed that is the metanucleate state that we'll discuss in tomorrow's lecture. So what we are discussing today's lecture, we'll conclude through the lecture. We have started with nuclear chemistry and radioactivity, and this is very interesting journey towards this nuclear radiochemistry. Here in the chapter, we have discussed what is the structure of atom, where are the nucleons, that is protons and neutrons, and where are the electrons involved. We can compare it with our solar system. We also seen how nuclide is represented here in the chemistry, X, Z, A, वगैरह उसे दिखाया जाता है. And based on that, we have also seen the classification of elements or classification nuclides regarding this one. This last one is remaining. We'll discuss in tomorrow's lecture and we'll go ahead. Till then, thank you very much. See you tomorrow.